तो अभी तक जो इंद्र वाटर या फिर जो अपना फिल्टरेशन सिस्टम है, उसका यूज केस क्या सिर्फ इंडस्ट्री तक लिमिटेड है, या फिर आप अभी और जैसे लोकल रेजिडेंसीज या फिर फील्ड्स वगैरह, फार्मर्स वगैरह के साथ भी आप जी। कोलैबोरेट करने का ट्राई कर रहे हैं? हम लोगों ने शुरू तो किया इंडस्ट्री के साथ, क्योंकि वी वांटेड टू पिक अप द मोर डिफिकल्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट। न्यू टेक्नोलॉजी, अब जितने डिफिकल्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स अर्ली ऑन सॉल्व करेंगे, हम्म। क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, लोगों का ट्रस्ट बढ़ता है, एंड दिस बी टू बी, सो Yes, पीपल sir. वांट टू हियर एंड सी व्हाट हैज एक्चुअली हैपेंड, हाउ ओल्ड द प्लांट्स आर, कितने दिनों से प्रॉब्लम के बिना चल रही है, या फिर कितने कम प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम तो सब में आती है, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ हाउ वेल यू आर एबल टू रिस्पॉन्ड टू देम, एंड इज योर प्रोडक्ट इवन built in a way that it allows for quick problem solving। ये सारी चीजें मैटर करती है उस चीज में। Having said that, the industries that we have been really working on are textiles। Textiles में we do garment washing, printing wastewater, इन सब का treatment and recycling। We are working with manufacturing में steel production, उनके effluents, aluminum production, and we are also looking at cement now। Chemicals and pharmaceutical industries, जहाँ पर extensively agrochemicals and APIs or formulations based pharmaceuticals, एंड फूड इंडस्ट्री में थोड़ा काम किया है, सी फूड प्रोसेसिंग या फिर बेकरीज, उनके साथ वी हैव वर्क देयर। एंड लास्ट इज सीवेज। सीवेज विच इज डोमेस्टिक और कमर्शियल, इसमें वी एंटर्ड लास्ट देयर, क्योंकि उसमें सबसे कम पोल्यूटेड लोड है कंपेयर टू अदर्स। एंड सो बेसिकली हमने रिएक्टर बनाया जो सबसे गंदा पानी ले सकता है, उसके बाद उसको बेसिकली डाउन साइज करना और उसके पावर रिक्वायरमेंट्स को कम करना वाज अ लिटिल इजियर फॉर अस। Sewage is also a different problem statement, but it was more manageable for us going that route than starting with sewage and scaling it up. So that is what we have done. And आज की डेट पे we are primarily focusing on hotels, hospitals and commercial buildings, ओके। and slowly working with residentials। मतलब मुंबई में अभी 2 residential projects में लगा रहे हैं। ओके। Hotels में we are working with some of the major brands there to put up apartments। ओके। एंड व्हाट अबाउट चेन्नई? ये चेन्नई में Uh, आपने बताया काफी yes। दिक्कत है ऑलरेडी पानी का। जी जी, हम लोग मतलब वी स्टार्टेड इन मुंबई एंड एवरीथिंग, बट नाउ वी आर एक्सपैंडिंग एवरीवेयर, एंड चेन्नई में वी आर स्लोली बिल्डिंग अप ए डेडिकेटेड टीम, चेन्नई एंड बैंगलोर, बोथ प्लेसेस। एंड वहां पर वी हैव ऑलरेडी कम इनटू कांटेक्ट विद अ इंडस्ट्रियल हॉटबेड इन द साउथ ऑफ चेन्नई, इन द साउथ ऑफ तमिलनाडु, तो वहां पर वी आर डूइंग, एंड वी हैव आल्सो स्टार्टेड वर्किंग विद तमिलनाडु startup council। Recently they did a product launch for us in their startup Tiruvilla, so they did that, and there has been a very good response. In fact, we are putting up dedicated pilot units there which can go show demos to people, help them understand how these systems and solutions will work on in their settings। वो important है कि उनके setting में कैसा काम करता है, does it actually solve the problem, or does it require support from other complementary things to solve it, and we allow customers to see that। we don't hide those results। we generally tell them कि अगर हमसे प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो पा रहा है, ग्रेट, नहीं हो रहा है, it's okay to be transparent, because one size does not fit all। we are always open to collaborate। in fact last 1.5 years में we have taken a repositioning, जहां पर हमारा रिएक्टर आज के डेट पे एनी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी के साथ कंबाइन किया जा सकता है। ओके। So suddenly the competition itself has changed। We are no longer looking at other water companies as competitors। In fact, we are working with many of them to solve very complex problems, statements across the industry। ओके, कहाँ कौन कौन से एग्जिस्टिंग जो भी टेक्नोलॉजी उनके साथ आपने अभी तक कोलैबोरेट किया है? कैन यू? Existing में a lot of you can talk about biological systems, whether they are aerated or they are anaerobic biological systems, तो उनके साथ हमने काम, we have combined our technology। We have also combined our technology with membrane based solutions, which includes ultrafiltration, even microfiltration kind of membranes, तो उनके साथ हमने collaborations किए हैं। And now we are also looking to collaborate with a few other electromechanical systems, even some solutions which use advanced oxidation processes, उनके साथ polishing applications के लिए। So quite a few possibilities there। In fact, there is no theoretical limit, because हम electrically driven है, we can control our performance कि हम कितना power input डालें, because it's all driven by the amount of electricity that we're putting into the system। So वो possibility है। ओके। तो जैसे अभी आप डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी के साथ मतलब अपने जी। फिल्टरेशन सिस्टम को ट्राई कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो आप डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में भी ट्राई कर रहे हैं, तो वहाँ हम्म। पे जो अलग अलग रीजन की वाटर अडेप्टेबिलिटी अलग अलग होती है,
वहाँ की वाटर मैनेजमेंट क्राइसिस और नीड अलग अलग होती है, तो उसको आप जी, किस तरह करते हैं, मतलब हाउ डू यू अप्रोच इन दैट? excellent question. In fact, one of the things we've always believed that while we are building a standardized product, like as I told you right at the outset that हमारा background automotives का है, so we are very inspired by the fact that automotives are built on a single assembly line. There's a lot of standardization and structuring, which was non-existent in the water industry, and so हमारा product per se is moving closer and closer towards extreme standardization. That's been our aim कि आप हर बार अलग प्लांट ना बनाएं, आप एक ऐसा प्लांट बनाएं एंड आपको उसके कंट्रोल्स में चेंजेस करने हैं सॉफ्टवेयर या फर्मवेयर ड्रिवन, वो ज्यादा बेहतर है। हार्डवेयर पे चेंजेस कम करें। ऑफ कोर्स एलिमिनेट नहीं हो सकती क्योंकि वाटर में वेरिएबल्स एंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स बहुत ज्यादा है, मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल्स दैट कम इनटू इफेक्ट आर टू मेनी, सो माइनर चेंजेस आर स्टिल रिक्वायर्ड, कस्टमाइजेशन की थोड़ी स्कोप रहती है। नाउ हैविंग सेड दैट, अलग अलग रीजन्स में, लेट्स से आप नॉर्थ को जा रहे हैं, उनके वाटर बैलेंसेस अलग हैं, उनके लोकल पॉलिसीज अलग हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, द टाइमिंग्स, द क्वालिटी ऑफ वाटर इनफैक्ट वो अलग रहती है, तो उसके हिसाब से हम कंट्रोल्स में चेंजेस करते हैं। सो वी ऑल्सो ट्राई अ लॉट टू पार्टनर विद अ लोकल कंपनी इन ए रीजन सो दैट वी कैन लेवरेज their local expertise. It's not just their understanding of the customer, but also their ability to work with local regulations, regulators, and help us understand how do we need to tweak our systems. सो सिस्टम हमने ऐसा बनाया जो ट्वीक हो सकता है, बट जानना जरूरी है कि किस तरीके से ट्वीक किया जाए, किन कंडीशंस के लिए ट्वीक किया जाए, एंड दैट वी अलाउ कस्टमर्स टू एजुकेट अस, बट वी हैव लोकल पार्टनर्स नाउ, and that's important. So today we are working in the northern part of India, western part of India, southern part of India, east में we are going to get in. हम अभी इंडोनेशिया में हैं, इंडोनेशिया में again we have partnered with a local entity to do this, another company in fact, and Vietnam में also we are getting in through that. So, but the approach is same, कि always partner with another local company which brings in their expertise. ओके, दैट्स ग्रेट, क्योंकि अगर आप पहले अगर लोकल पार्टनर से अगर आप कोलैबोरेट करते हैं या उनसे पार्टनरशिप करते हैं, तो आपको काफी कुछ ऑलरेडी जानने को मिल जाता है, क्योंकि उनको बिल्कुल, आइडिया है उस जगह का, उस रीजन का। तो बिल्कुल, यहाँ तक आप टाइम भी बचा रहे हैं वहां पर और पैसा भी बचा रहे हैं, रिसर्च। बिल्कुल। आपको आपका आपका योर बिजनेस, योर प्रोडक्ट, योर सोल्यूशन इज एज गुड एज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द problem statement of your customer, and who better to help you understand that than a person, a local partner who spent at least 20 years doing that. यस। So we must be appreciative of their experience and their knowledge here. ओके, दैट्स ग्रेट। एंड जो आपकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट अप्रोच होती है, ठीक, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे, मतलब किस तरह से, क्या साइकिल होता है पूरा, किस तरह से आप या करते हैं? क्योंकि अब जैसे आपने बताया 4 पेटेंट आप ऑलरेडी फाइल कर चुके हैं, और भी आ रहे हैं अभी ठीक, लाइन में है, तो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ दैट? ठीक। सो जनरली R&D में दो चीजें होती हैं, एक है कि आज आप प्रॉब्लम, व्हाट इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट यू आर सॉल्विंग टुडे, एंड व्हाट इज द सोल्यूशन फॉर दैट, व्हाट आर द इंप्रूवमेंट्स दैट यू रिक्वायर to take it to the level where it is kind of solving the problem statement exactly the way you visualized it. The second is what is required in the future, how is your problem statement evolving. So R&D के दो पहलू हमेशा होते हैं कि एक प्रेजेंट के लिए काम कर रहे हैं आप, एग्जिस्टिंग आपके सोल्यूशन को इटरेट कर रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं, और दूसरा फ्यूचर में ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट किस तरीके से इवॉल्व कर रही है, मार्केट कैसे इवॉल्व कर रहा है, उसके हिसाब से यू आर प्रिपेयरिंग. So for the present, generally whenever initially after we build the reactor, we take it to the client site, we run it on actual use case conditions and find out what are the areas where actual problems are happening. And generally हम लोग ऐसा नहीं कि थोड़ा चलाते हैं, we try to run it for prolonged periods to understand. In fact हमारे existing plant का data भी continuously monitor होता है, जहां पर सेंसर्स लगे हैं वो समझने की कोशिश करते हैं, जहां पर ह्यूमन फीडबैक है, स्पेशली जो लोग प्लांट्स को कंटिन्यूसली रोज देख रहे हैं उनका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सो वी ट्राई टू एक्यूमुलेट ऑल ऑफ दिस एज बेस्ट एज वी कैन, and then this is incorporated to the new iteration model. So आपके all the problems that have happened and whether we have gone through it, then it is retested, it is observed over the next cycle of testing कि ये problems में से कितने reoccur कर रहे हैं. So it's a very continuous feedback driven process. Exactly. And generally हमको वो स्टडी पीरियड, जो डेटा एक्यूमुलेशन पीरियड लंबा होता है, प्रोटोटाइपिंग हम बहुत जल्दी करते हैं, मतलब अब 1-2 महीने के अंदर डिजाइन करके इमीडिएटली द नेक्स्ट थिंग इज आउट. Once we have finalized कि okay, this is a stable version of an improved product,
then it is offered even to our existing customers. One of the unique things is that every Indra customer, even if they have put up a plant, we always offer them the latest upgrade. And because they were early adopters, it is offered at cost. We don't charge anything. We allow them to upgrade. And upgrade भी ऐसी होती है कि कहीं पर एनर्जी कंजम्पशन 15% पहले से कम हो गई तो उसका पेबैक हो जाता है जल्दी. So we ensure those things come into play. The other thing that I was talking about is something for the future. Like if there is a particular market where the problem statement is there, some segments that we were not targeting earlier and we want to get in, that we anticipate becoming a very big opportunity in the future. So हम उसके लिए भी काम करना शुरू करते हैं. For example, recovery of hydrogen from our electrolysis processes. Yes. सब लोगों ने बहुत wastewater is a fantastic source to be recovering hydrogen from. So इस hydrogen की energy को tap करना, whether it is thermal energy, electrical energy, whatever form that we choose to. So this is something we are working on. Or improving, moving towards drinking water, even fresh water, drinking water की unavailability. आप सारी अलग-अलग तरीके के ट्रीटमेंट करते हैं, बट उसमें पानी में फ्लोराइड्स रह जाता है, ब्रोमाइड्स रह जाता है, हेवी मेटल्स, साइनाइड्स, all kinds of toxins जो लोगों के food chain में घुस रही है. And it's a big health hazard for everyone. So targeting those segments. So there is ongoing work for that. So that's how we balance out R&D. And abhi the 4 patents which have been granted, very soon we should have at least 3 more filings. But it's not about patents, it's more about having actually working solutions. Matlab, if the solution is not fitting into a customer's use case, then वो solution बनाने का कोई मतलब नहीं है. उस पेटेंट का कोई फायदा नहीं हुआ, I guess. अगर वो ऑन ग्राउंड काम वर्क नहीं कर रहा, वो सॉल्यूशन ऑन ग्राउंड प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा अगर वो, तो पेटेंट सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर ही रह गया. बिल्कुल बिल्कुल जी. तो अभी आपने बताया R&D में आप डेटा का भी काफी यूज करते हैं, तो जी कहते हैं डेटा इज द न्यू ऑयल. इट इज वेल सेड इन द इंडस्ट्री. तो डेटा का आप किस तरह से कलेक्ट करते हैं और किस तरह से यूज करते हैं, थोड़ा सा उस बारे में मुझे बताइए. देखिए, डेटा कलेक्ट करने के ऑब्वियस 2 ही तरीके हैं. वन इज यू हैव इधर सेंसिंग sensors which are monitoring parameters, whether it is operational parameters in the plant या फिर different equipment जो लगे हैं उनके different conditions को आप capture कर पा रहे हैं क्या उनसे. And the other is water quality parameters that we look at. Okay, what are the parameters that you look at? Huge variety. मतलब आप अगर sensor से कर रहे हैं तो it could be the usual COD, BOD, the suspended particles in water, पानी में कितना pH variations है, total dissolved solids in water, or the turbidity in water. मतलब जो sensors allow करते हैं करने के लिए. Apart from that, even looking at other use cases separately, बाहर labs में measure करते हैं. The oil and grease, the nitrogens, the phosphates, silica. मतलब there are a host of parameters, and depending upon different waters, we start profiling them. और हमारे internal use cases में भी continuously labs में ये चीजें monitor होती हैं. This is one. The other is system parameters, like आपके पंप्स चल रहे हैं उसमें कैसे फ्लक्चुएशंस हैं, पीक करंट कैसा वेरी कर रहा है, उसको आप स्टडी करोगे तो आप यू कैन एट सम पॉइंट यू रियलाइज दैट द पंप इज गोइंग टू फेल. ओके, देयर आर वेरिएशंस देयर. या फिर आपके रिएक्टर्स में आपके वोल्टेजेस कैसे वेरी कर रहे हैं, व्हाट इज योर पावर कंजम्पशन ऑफ द रिएक्टर, इज द वेरिएशन in sync with variations in water quality, or are there other things affecting it? So आपके even physical activities like intervention by human beings कहाँ पर हो रही हैं, what kind of activity, what is their feedback कि हमारे cleaning cycles हुए हैं reactors में, but उसके बाद भी अगर उनको दिखा कहीं पर कि this cycle was not efficient, so physically what has happened, physical inspection. So it's a mixture of everything that comes back to you. Okay. And then these parameters are kind of, you sample them, then you cross reference them, and then you devise equations. आप ultimately इसको आपके operating conditions इसके हिसाब से algorithmically आप decide करते हैं, but आपके future reactions to problem statements. Okay. How do you troubleshoot, or how do you react to a problem statement? What would you correct? ये चीजें होती हैं. One interesting thing that we are today trying to do is with all this accumulated data, we are also trying to build predict water quality and decide operating conditions entirely algorithmically. जो हम sensors पे dependence कम करना चाहते हैं. Sensors are expensive, very difficult to calibrate and operate in these tough conditions. So that is an ongoing work. We have made good progress with that. Okay. And probably accumulation of another 12 to 18 months of data will help us a lot with that. Because
any machine learning predictive model requires a huge जी, amount of data. एंड इन बिल्कुल। और आपके केस में तो शायद बहुत ज्यादा डेटा चाहिए, क्योंकि जो रियल वर्ल्ड जी, डेटा होता है वो काफी अनक्लीन्ड होता है, काफी मेसी होता है, तो काफी सारे मतलब बहुत अलग अलग ही पैरामीटर्स आ जाते हैं, मतलब देयर टू मेनी पैरामीटर्स देयर, एंड सो सैनिटाइजिंग द एंटायर डेटा सेट एंड देन डिसाइडिंग ऑन द actual control variables and deciding KPIs केपीआई. based on that becomes very critical to do to Okay. that. So, like on that KPI, what are the performance metrics that you use? सो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस मेट्रिक्स ओवरऑल हम सब कुछ स्टैंडर्डाइज कर देते हैं, जितने भी वेरिएबल्स उनको स्टैंडर्डाइज करके हम चार पांच चीजें देखते हैं। वन इज अल्टीमेटली कॉस्ट मेट्रिक्स पर केल, आप सारे एक्शंस के सम टोटल करके व्हाट हाउ इज इट रिफ्लेक्टिंग ऑन कॉस्ट, आपने एक पर्टिकुलर चेंज किया सिस्टम में, इज इट अफेक्टिंग द पर मीटर क्यूब ट्रीटमेंट कॉस्ट, Okay. नंबर वन, ओवर ए सस्टेन पीरियड ऑफ टाइम, तो वो मॉनिटर किया जाता है। एनर्जी कंजम्पशन, हम जब एक रिएक्टर इंप्रूव करते हैं सस्टेन पीरियड में उसके एनर्जी कंजम्पशन कम है क्या, स्पेशली जब पीक लोड्स शॉक लोड्स वेरिएशंस आती हैं पानी में, इज द रिएक्टर स्टिल वर्किंग एट अ रिड्यूस्ड एनर्जी सेटिंग, सो उसके दैट इज बीइंग मॉनिटर्ड। थर्ड इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लीनिंग दैट इज रिक्वायर्ड, सो वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि अल्टीमेटली आप पानी से गंदगी निकाल रहे हैं, आप पानी से पोल्यूटेंट्स निकाल रहे हैं, सो द सिस्टम ऑल्सो हैज टू पर्ज आउट द पोल्यूटेंट्स, so your cleaning processes are nothing but the natural purging out process, are the purging out processes. So अगर वो सही नहीं हो रहा है, basically the pollutant is going to accumulate within the stream inside your system and it's going to choke up, or the performance is going to suffer. अब सब कुछ reactor में करके end में पानी में अगर वही pollutant वापस आया तो then it's a problem. So उसका उसका एक मॉनिटरिंग होता है, एंड लास्ट इज वी आल्सो मॉनिटर द फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स, उनके ब्रेकडाउन्स, कि that allows us to continuously improve upon our component selection, but also choose components that are more compatible with each other. Okay. So every variable is ultimately condensed to this, and all operating conditions, algorithms that are written down, and how the system operates, design philosophies revolve around optimizing cost, optimizing energy, reducing breakdown, and most importantly, improving pollutant purging from the system. Okay. So that's a lot of, I guess, things Yeah. you are doing. Lot of performance metrics. It depends on the site. It depends on the time. I guess depends Yeah. on. बट मोर और लेस इन चार में सबको आप ये कर सकते हैं, मतलब आप कोई भी साइट पे जाइए, अल्टीमेटली उनके केपीआईस के मतलब एक्चुअल वैल्यू चेंज हो सकते हैं, लेकिन केपीआई का डिफाइनिंग फिलोसफी यही होगा। ओके. ओके, नाइस. तो इसके अलावा क्या कोई कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव्स भी आप ले रहे हैं, और सस्टेनेबिलिटी एफर्ट्स जो कि इंदिरा वाटर अभी ओवरटेक कर रहा है, या फिर इन्वॉल्व है किसी के साथ, या जी फिर जी। आप फ्यूचर में कुछ इंगेज होने का प्लान है आपका इस In fact, तरह? recently ICICI Bank had partnered with us for a CSR initiative, जहाँ पर a portable plant was built, and this portable plant was kind of transported across different parts of Mumbai for treating water, cleaning up things. पास्ट में एक बार हमने तेलंगाना वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ पार्टनर किया था, थैंक्स टू देम, इट वाज देयर इनिशिएटिव अलोंग विद ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन टू क्लीन अप कुदीकुंटा लेक। तो वी हैड टेकन अ पोर्टेबल सिस्टम, वो पानी उसमें ट्रीट कर रहे थे, और जो पानी निकल रहा था दे वर यूजिंग इट फॉर इरिगेशन, सो दोस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स वी डू, बट yeah, we want to increase this engagement for sure. We think a lot can be done. We believe that there is a place for our mobile portable systems, to go around, because we know 70% of the new buildings coming up in many of these urban cities is not connected to the central sewerage network. And it's tough. We blame the government everywhere, but आप सोचिए ना, आपको सारे रोड्स खोद के इतने सारे नेटवर्क बनाने हैं, इट टेक्स टाइम, एंड टुडे इट्स रियली टफ, मतलब किसी को पता भी नहीं है कि कौन सा पाइपलाइन किधर से गया है, जैसे and having to dig up. So all those problems exist. So we believe that we can solve that problem statement with our portable plants, and we can partner. We're reaching out to multiple bodies. So hopefully more can happen. We are looking forward to that. एंड अभी आपने से गवर्नमेंट की भी बात की, तो गवर्नमेंट का क्या रोल होता है इस तरह के सॉल्यूशंस को डिप्लॉय करने में या फिर एक्सपांड करने में, जैसा अभी आपने Yeah. बताया? देखिए, गवर्नमेंट का रोल इज मोर फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट इज एन एनेबलर। ओके. सो एनेबलिंग का पर्सपेक्टिव आता है जब पॉलिसी आती है कि यस, वी ऑल नीड टू बिकम कॉन्शियस अबाउट वाटर,
सो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन पे कंट्रोल लाना कि आप इतना ही पानी ड्रॉ कर सकते हो. You cannot keep reducing aquifers, especially industrial activity में don't draw out all the water from the borewell. So यहाँ पर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन आता है. So those things are important. But इंटरवेंशन और जरूरी हो जाता है एट द डिस्चार्ज पॉइंट, जहां पर polluted water का ट्रीटमेंट must be enforced. So it has improved. I would definitely say that a lot has improved. But so treatment enforce हो रही है, लेकिन जो क्वालिटी पैरामीटर्स सेट किए गए हैं वो एनफोर्स हो नहीं पा रहा है आज तक. Okay. And that's because the sensors are expensive. So we need to find a more apt solution where instead of spending so much money, we should be able to tap into the data. And there are a lot of startups doing this work. It's not just Indra. A lot of startups are also working on the sensor side of things, and I know some of them have done phenomenal work. So these guys, we should be able to have a data sharing network there where we are able to tap into the different models that have been built to understand water quality parameters that are changing. And the last thing where government I think can do a little more work is on pollutant based charging. So India में volumetrically ज्यादातर चार्ज की जाती है पानी, लेकिन हर एक यूजर को उसके pollutant load पे चार्ज नहीं किया जाता है. मतलब फॉर एग्जांपल अ फार्मास्यूटिकल गाय वुड बी जनरेटिंग 15-20,000 liters of wastewater per day, बस उसका pollutant load 1 लाख होगा milligrams per liter, for example. टेक्सटाइल वाला वुड बी जनरेटिंग 4 लाख लीटर ऑफ वेस्ट वाटर पर डे, बट उसका पोल्यूटेंट लोड होगा सिर्फ 3,000 मिलीग्राम्स पर लीटर. तो सो क्या होता है कि बट द रेट्स चार्ज टू बोथ आर द सेम. सो द टेक्सटाइल गाय इज लाइक द फार्मा गाय शुड बी चार्ज्ड अ हायर डिफरेंशियल रेट. सो तब लोगों को एक इंसेंटिव भी मिलती है कि ओके, if my pollutant loads are lower and if I'm meeting the norms or if I'm reusing more water, then I'm actually saving more money in the business. And the freshwater price has to be more uniform. There's huge disparity on that. And of course, geopolitical reasons, a lot of things come into play. But yeah, I won't say government has not done. In fact, in the last 8-10 years, a lot has been done. But a lot remains on the एनफोर्समेंट साइड, क्योंकि उनके पास वो स्ट्रक्चर ही नहीं आ पा रही है जहां पर वो एनफोर्स करें. क्वालिटेटिव डेटा आएगी तभी वो एनफोर्स कर पाएंगे. क्वालिटेटिव डेटा इज मिसिंग, क्वांटिटेटिव सब कुछ है हमारे पास. ओके, सो वी नीड क्वालिटेटिव डेटा टू लाइक expand it more further or to solve the problem on the ground level at the very niche. Exactly. Okay.